Hi everyone. Today we are going to see the lesson 8 of class 5 in Cbse Hindi Veena book. The name of the lesson is Kaziranga uddaan ki yathra. This is in a letter format. We will see this through English explanation. Come, let us start. प्रिय बच्चों, यह पत्र मैं तुम्हें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लिख रहा हूँ। काजीरंगा उद्यान असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु व पक्षी है। आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। इसके लिए हमें बहुत सवेरे उठना पड़ा, तब सूरज भी नहीं निकला था। Dear children, I am writing this letter to you from Kaziranga National Park. Kaziranga National Park is situated on the banks of the Brahmaputra River in Assam. It is home to many kinds of animals and birds. Early this morning, we went on elephants to explore the park. We had to wake up very early, even before sunrise. उद्यान में सैकड़ों पक्षी थे। हिरन और जंगली बैंसों के कई झुंड आराम से घास चर रहे थे। उनमें कुछ एक सींग वाले गैंडे भी थे। इसी पशु के कारण काजीरंगा पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया है। The park was filled with hundreds of birds. Many herds of deer and wild buffaloes were peacefully grazing on the grass. Among them were a few one-horned rhinoceros. Kaziranga is famous all over the world because of this animal. हिरणों और बैंसों ने हमें संदेह की दृष्टि से देखा और अलग हट गया, पर गैंडे वही जमे रहे। हमने एक सींग वाला गैंडा पहली बार देखा। यह हाथी के बाद भारत का सबसे बड़ा पशु है। इसको इंडियन राइनो भी कहते हैं, यानी भारतीय गैंडा। केवल भारत और नेपाल के जंगलों में पाया जाता है। The deer and buffaloes looked at us suspiciously and moved away, but the rhinoceros stood their ground. It was the first time we had seen a one-horned rhinoceros. It is the largest land animal in India after the elephant. It is also called the Indian rhinoceros and is found only in the forest of India and Nepal. Indian rhino के शरीर पर मोती तक होती है, जैसे वह कवच पहने हो। इस पर हमारे महावत ने एक रुचिकर कथा सुनाई। भगवान कृष्ण ने एक बार सोचा कि हाथी के बदले गैंडे को रण क्षेत्र में बेचा जाए। उन्होंने उसे कवच पहनाकर अभ्यास कराया, पर गैंडा निर्देशों का पालन न कर सका। बस भगवान कृष्ण ने कवच सहित ही उसे वापस वन में भेज दिया। Our Mahat told us an interesting story about it. Once, Lord Krishna thought of sending the rhinoceros to the battlefield instead of the elephant. He dressed it in armor and trained it, but the rhinoceros could not follow the instructions. So, Lord Krishna sent it back to the forest wearing the armor. सैकड़ों वर्ष पहले इंडियन राइनो पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में असम तक पाया जाते थे, पर लोगों ने राइनो के सींग पाने के लिए उनका शिकार किया। लोग यह मानते थे कि सींग में औषधि संबंधी गुण है। Hundreds of years ago, Indian rhinoceros were found from Peshawar in the west to Assam in the east. However, people hunted them for their horns because they believed the horns had medicinal properties. बाद में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि सिंह में ऐसे कुछ नहीं है। इंडियन राइनो का शिकार इतनी अधिक संख्या में हुआ है कि अब उनकी संख्या कम हो गई है। इनमें आधी से अधिक काजीरंगा में रहते हैं, इसलिए पूरे संसार से पशु प्रेमी इसे देखने काजीरंगा आते हैं। Later, scientists proved that the horns have no such medical value. Excessive hunting greatly reduced the number of Indian rhinoceros. Today, more than half of them live in Kaziranga. That is why wildlife lovers from all over the world come here to see them. हमारा हाथी आगे बढ़ा तो एक माता
राइनो अपने बच्चों के साथ दिखाई दी। महावत हमें पास नहीं ले गए। उन्होंने कहा कि शिशु साथ में हो तो माता राइनो हिंसक हो जाती है। हाथी के पास आने पर वह हमला कर सकती है। As our elephant moved ahead, we saw a female rhinoceros with her babies. The mahout did not take us any closer. He explained that a mother rhinoceros becomes very aggressive when her young are with her and may attack even an elephant. सुबह की यात्रा में हमने हिरणों के अनेक झुंड देखे। काजीरंगा में 4 प्रकार के हिरण हैं। भौंकने वाले हिरण, बोने सुअर हिरण, दलदली हिरण और साबर हिरण। हमें वहाँ जंगली सुअर भी दिखाई दिए। During our morning trip, we saw many herds of deer. Kaziranga had 4 kinds of deer: barking deer, hog deer, swamp deer and sambar deer. We also saw wild boars. हमारी यात्रा शीघ्र समाप्त हो गई। मेरा मन अभी भरा नहीं था। अगले दिन सुबह का नाश्ता करके हम फिर निकल पड़े। इस बार हम जीप में गए, साथ में वन संरक्षक भी थे। Our trip ended quickly, but I still wanted to see. The next morning after breakfast, we set out again. This time we traveled by jeep along with a forest ranger. ड्राइवर हमें एक बील यानी झील की ओर ले गया। बील पर सैकड़ों पक्षियों के झुंड थे। पेलिकन, सारस, बगुला और कलहोन इत्यादि। एक ही स्थान पर इतने सारे पक्षी मैंने कभी नहीं देखे थे। बील के पानी में कुछ ऊदबिलाव भी उछल कूद कर रहे थे। The driver took us to a bill, that means lake. Hundreds of birds had gathered there, including pelicans, cranes, egrets and cormorants. I had never seen so many birds in one place before. Some otters were also jumping and playing in the water. लौटते समय तो हमारे बाकी ही खुल गए। सामने जंगली हाथियों का एक झुंड दिखा। हमें बहुत प्रसन्न हुई। झुंड में 5-6 बच्चे थे। जब तक पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया, तब तक एक विशाल हाथी खड़ा निगरानी करता रहा। While returning, we were very lucky. We saw a herd of wild elephants. We were delighted. There were 5 or 6 baby elephants in the herd. A huge elephant stood guard until the entire herd had crossed the road safely. काजीरंगा में मांसाहारी रॉयल बंगाल टाइगर भी है, पर हमें दिखे नहीं। गाइड ने बताया कि उन्हें देखना कठिन है क्योंकि वे रात में ही निकलते हैं। काजीरंगा is also home to the Royal Bengal tiger, but we did not get to see one. The guide told us that it is difficult to spot them because they usually come out at night. कुल मिलाकर यह एक अद्भुत अनुभव रहा। काजीरंगा में अलग अलग प्रजाति के पशु शांति और भाईचारे से संग संग रहते हैं। मेरे मन में यह बात बार बार उठ रही थी कि क्यों नहीं मानव भी इसकी तरह ही शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहता। हम अपने वन्य साथियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना तुम्हारा चाचा अरूप। Overall, it was wonderful experience. Different species of animals lived together peacefully in Kaziranga. I kept thinking why human beings cannot also live together in peace and harmony like them. We can learn a great deal from our wild friends, can't we? Your Uncle Arup. If you like this video, please like, share and comment. Don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon. Thank you.